And We were under the article number 13. Article 13 make all laws and administrative actions which violate fundamental rights ipso facto null and void. माने उसको कैंसिल कर देता हूँ. तो ipso facto का मतलब क्या है? Very very important for your exam. What is the ipso facto? Ipso facto means by that very fact or no act. by that very fact or act. So that क्या article, मतलब हुआ सर इसका? by that very fact, उसके साथ में ही, so there is no other thing to support it. It itself is a, it is itself is enough. Article 13. What is Article 13 known as? Judicial review. Judicial review. Then, please read. Someone else, please read. कोई और पढ़िए. सर करीम, कबिल, नवीद पढ़िए. सर एक हेलो. बार ये आर्टिकल 13, सर ये आर्टिकल 13 वाला एक बार समझा दीजिए ना, समझ नहीं आया। फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ तो जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होता हो सकता है, और कुछ भी नहीं. If the fundamental rights are violated, हम्म article review, judicial review होता. If parliament make any laws which violates fundamental हम्म rights, तो article 13 के तहत you can go to the court हाँ and review the law. That's all. अच्छा, वही Like 32 ना सर, आर्टिकल 32 के तहत। article 32 के तहत that is directly fundamental rights. अगर कोई लॉ को चैलेंज करना तो क्या करते हैं आप? तो constitutional validity of any जुडिशियल law, रिव्यू। we use हम्म judicial review. Article 13 along with article 32 supporting. अच्छा। हम्म Immediate action article अगर 32. कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रहा फंडामेंट। Immediate action is through article 32. But if it takes time, but you have to go through article अच्छा। 30, article 13 also. अगर कोई लॉ को चैलेंज करना है, पूरा कानून को, so you are going to article number हम्म 30, article number 13 via 32. तो मतलब फंडामेंटल वायलेशन में दोनों का यूज अपन कर सकते हैं। Yes. Then please read. कोई दूसरा नहीं पढ़ने वाले हैं? नवीद, सिद्रा, मुजम्मिल, हुरैरा. Article 14 guarantees equality before laws and equal protection of laws. तो आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉस. इसमें दो कॉन्सेप्ट है. आर्टिकल 14 में क्या है? देर आर टू कॉन्सेप्ट. आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस. बट जो आपको याद रखना है, इक्वालिटी, नेक्स्ट लाइन. The concept of equality before law is of British origin, while the concept of equal protection of laws is of American origin. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पूरे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए? वी हैव टेकन फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम विच कंट्री? इससे यूएसए. बट यूएस से। इन अंडर आर्टिकल 14 अगेन, व्हाट इज आर्टिकल 14? इक्वालिटी बिफोर लॉ And equal protection of law. Then equality before law is taken from which country? ब्रिटिश ओरिजिन And equal protection of laws is taken from अमेरिका। American origin. So इतना पढ़ो, it's सर ये more than enough. सर ये रूल ऑफ लॉ क्या है? Procedure established by law. Rule of law following the principles of natural justice. रूल ऑफ लॉ अपन जो है ब्रिटिश से लिए ना सर। Yes. हम्म
तो बेसिक बेसिक चीजें जो आपको याद रखना है, रूल ऑफ लॉ हैज टेकन फ्रॉम ब्रिटिश, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वी हैव टेकन फ्रॉम जापान, ब्रिटिश। प्रोसीजर ओ एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सॉरी, हाँ आर्टिकल 21। तो प्लीज नोट इट डाउन, क्या क्या लिए। रूल ऑफ लॉ टेकन फ्रॉम, रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश। रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय यूके। लॉ जापान। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूल ऑफ लॉ। सर रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में आता है। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ है, द होल हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन इज रूल ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय इज टेकन फ्रॉम जापान, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज टेकन फ्रॉम, आर्टिकल 21। इक्वालिटी बिफोर लॉ अमेरिका। इज टेकन फ्रॉम विच ओरिजिन, ब्रिटिश। ब्रिटिश। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज टेकन फ्रॉम अमेरिका। अमेरिकन ओरिजिन। सर ये दोनों ही इक्वलिटी बिफोर लॉ के हिस्से में मतलब पार्ट है क्या? आर्टिकल 14 का पार्ट है। ओके। द टोटल फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम यूएसए। यूएसए। Okay, so this is more than enough for your exam. The first concept इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस रिमेंबर दैट इक्वलिटी बिफोर लॉ इज ब्रिटिश, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अमेरिकन, रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश, एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापान। देन next article 15. What is article 15? Please read. सर वो नोट नहीं किया एक बार। सर थोड़ा सा और नीचे करिए। ये जरूरत नहीं है, इतना जो मैं हाईलाइट करा वही नोट करिए बस। हाँ हाँ, ठीक है सर, स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में लिख लेता हूँ। नेक्स्ट कमिंग टू आर्टिकल नंबर 15. What is article 15? Prohibition of discrimination on the ground of 5 grounds: religion, race, caste, sex, place of birth. Second, एक second. What is article 15? Please read. Article 15 prohibits discrimination on the ground of religion, Religion, race, caste, sex और place of birth. तो क्या है? What is article 15? Prohibition prohibits of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex, or place of birth. ये 5 चीजें याद रखना आप। Article 15 prohibit discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. But These are the things which are very very important. Next point. however, the state can make any special provisions for women and children, and also for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for SCs and STs. So अगर there is no state cannot government cannot discriminate based on religion, race, caste, लेकिन अगर वुमेन एंड चिल्ड्रन का मसला आ गया, तो सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस आ गए और SC STs आ गए,
तो they can make some provisions. ठीक है. Next, what is Article 16? Article 16 provides for equality of opportunity in the matters of public Equality, employment. equality of opportunity. What is Article 16? Article 16 provides equality of opportunity in the matters of public employment. ठीक है. Next. However, the state may reserve any post or appointment in favor of any backward class of citizens. However, the state may reserve any post or appointment in favor of any backward class of citizens. Example, EWS reservations. EWS reservation. What is the amendment of EWS? Sir, 102. 103. EWS reservation 103. 103rd 103. amendment. 103rd amendment. How much reservation? 10%. 103rd amendment. 10% 10% reservation. reservation. Very, very important. Economically weaker sections के लिए EWS reservation. What is the amendment number? 103. 103rd amendment. That is 10%. 10 Amendment Act 2019. 2019. And how much reservation is given? 10%. 10% In education and jobs and promotion. In education as well as promotion. promotion. So Article 16, they might ask कि 103rd amendment आया था EWS का, कौन से आर्टिकल में आया? What is Article 16? Article 16. What is Article 16? Equality of opportunity. Equality of opportunity in the matters of Public Public employment. employment. public employment. But state may reserve any post. Example, economically weaker sections, EWS reservations, EWS. 103rd amendment 2019, 10% reservations for education and promotions. Promotion. ठीक है? In education and promotions. Please remember, very, very important. कैसा ही पूछता है. Done? Any doubts here? No, sir. No. Next. What is Article 17? Abolished untouchability. Article 17 abolished untouchability. इतना ही याद रखो. It's more than enough. Then, what is Article 18? Abolishes titles, however, it does not prevent other public institutions such as an university to No, confer इतना ज्यादा titles. कुछ भी याद नहीं है. What is Article 18? It abolishes Titles. titles. ठीक है. और ये याद रखो. लास्ट पॉइंट पढ़ो. No Indian citizen can accept a title from a foreign state. No Indian can take titles from
फॉरेन स्टेट, ना इंडिया में लेना ना बाहर लेना, बी वेरी क्लियर, एक्सेप्ट ऑथराइज बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के परमिशन से। क्लियर है पॉइंट? सर क्या एक एग्जांपल दीजिए सर, क्या नो इंडियन सिटीजन कैन एक्सेप्ट अ टाइटल फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट का क्या मतलब है सर? एग्जाम्पल नाइटहुड हम्म गिवन बाय ब्रिटिश, टाइटल, गिविंग टाइटल सर, example knighthood given by the Britishers, giving title sir. So no Indian citizen can accept a title from a foreign state. Example knighthood given by the British. Done. So what is Article 17? Abolish untouchability. Abolition of untouchability. Abolition of untouchability. No. And can any Indian accept other countries' titles? No. No. Example Knighthood. given by the British, giving title sir. Next, तो what सर is ये article? हटा, तो ये नाइटहुड सर एबॉल्यूशन हो गया इसका कि नहीं? वो ब्रिटिश का मसला है, आपको if they are अच्छा giving बिफोर, you cannot take, that's बिफोर all. Then what is Article 19? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. What is Article 19? Please read. Guarantees freedom of speech, freedom of assembly peacefully without arms, to form associations or unions or cooperative societies, to practice any profession, or to carry on any occupation, trade or business. So these are the basic freedoms which have been given under our constitution, which we have discussed already. So what is Article 19? Guarantees freedom of speech, freedom to assemble peacefully without arms, to form associations or unions or cooperative societies, to practice any profession or to carry any occupation or trade or business. Then बिजनेस. this is Article number 19. Next, please read. 19 clause 1. Next line क्या है? These rights are, however, controlled by various clauses to Article 19 clause 2, whereby the state can impose reasonable restrictions on grounds of sovereignty and integrity of India, security of state, public order, decency or morality, etc. So what is Article 19? These are the basic rights. These are the basic rights. But if the government wants, it can apply reasonable restrictions. What did we study in the, are they are absolute or conditional? Non-absolute. They are absolute or conditional? कंडीशनल. They are conditional. One is Conditional. subjected to restrictions. और वो कौन से restrictions है? On the grounds of sovereignty. On the grounds of sovereignty and integrity of India. On the ground of security of state, public order, decency. क्या बता रहा or है? morality, etc. These rights are, however, controlled by various clauses under Article 19 clause 2, whereby state can impose reasonable restrictions. कौन से restrictions हो सकते हो? Grounds सर of क्या बोल रहे हैं आप? sovereignty and integrity of What India, are the restrictions? What are the security of grounds of state, restrictions? Can be applied on fundamental rights. sovereignty, हम्म
sovereignty and integrity of India, security of state, public order, decency or morality. Morality. तो जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे वो कौन से ग्राउंड्स पे हो सकते? मतलब सर ये बाउंड्रीज हैं, फंडामेंटल राइट्स इसको क्रॉस नहीं कर सकता है। If they cross, restrictions can be applied. हम्म। So कौन से है? sovereignty and integrity of India, security of state, public order, decency और morality। सर decency का क्या मतलब है? It is not, if you do it, it's not good for the public. हम्म। morality मतलब against the humanity। In the general views of public, morality, हम्म morals, right and wrong, ethics. हम्म So these are very very important. कौन से restrictions है? Which restrictions can be on? What are the restrictions which can be applied on fundamental rights? First is sovereignty and integrity of India on the grounds of sovereignty and integrity of India, security of state, public order, decency or morality. Done? Any doubts here? हम्म। No, sir. तो ये नोट डाउन कर लीजिए कौन से ग्राउंड्स है। सर ये आर्टिकल 19 क्लॉज 2 तो वो है ना, असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स। चेक योर कॉन्स्टिट्यूशन। डन हो गया? Yes, sir. प्लीज नोट इट डाउन। अच्छा वो 19 क्लॉज 1 है। तो क्या है? sovereignty and integrity of India, security of सिक्योरिटी ऑफ state, स्टेट, public order पब्लिक ऑर्डर, and डिसेंसी और मॉरलिटी। decency or morality. Next, what is Article 20? प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। States that no person shall be convicted for any offense except the violation of a law in force. No person shall be convicted for any offense except for the violation of law in force. Force. It means no ex post facto law. 20 clause 1. मतलब क्या है? जो 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 भी जिस टाइम पे ऑफेंस हुआ वो टाइम पे कानून से आप किसी को सजा देना है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो एप्लीकेशन ऑफ लॉ। व्हाट इज सेकंड पॉइंट? No person shall be punished for the same offense more than once. No नो double डबल jeopardy. जियोपार्डी। क्या है? नो पर्सन शैल बी पनिश फॉर द No double jeopardy. सेम ऑफेंस मोर देन once. It means One. नो डबल No जियो double बॉडी। jeopardy. no double jeopardy. Third point,
No person shall be compelled to be a witness against himself. No self. No self-incrimination. So no self-incrimination. First, in Article 20 clause 1 is no ex post facto application of law. उसके बाद 20 clause No 2 double is jeopardy. no double jeopardy, and 20 clause 3 is No No self-incrimination. self-incrimination. नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में से यही इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 20 फर्स्ट इज नो एक्स पोस्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ. आर्टिकल 20 क्लॉज 1 नो डबल जो 20 क्लॉज 2 नो डबल जो पार्टी. 20 क्लॉज 3 नो सेल्फ No No self-incrimination. इंक्रिमिनेशन. नेक्स्ट Article 21. आर्टिकल 21. व्हाट इज आर्टिकल 21? 21. वेरी Guarantees वेरी that इंपॉर्टेंट. no person shall be guarantees that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law. एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर established by. Established by law. So no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law. कौन से कंट्री से लिए? Japan. We have taken this procedure established by law from Japan. 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 So Article 20 and Article 21 doesn't get suspended even during emergency. Next, what Article 21 capital A? Provides for the free and compulsory education to children. It states that the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such a manner as the state may be law. Determine this provision comes under the provisions of fundamental rights, i.e., right to education. This provision exclude the adolescent age of 14 to 18 years only. इसमें क्या है? It says that what is the age group it is being given? 6 to 14. 6 to 14. 6 to 14 years, and it does not include. It excludes adolescent age of 14 to 18. 14 to 18. 18. इतना याद रखो. What is Article 21 capital A? Right to education, free and compulsory education to children. Age group 6 to 14. To 14 years. 6 to 14 years, and it does not include 14 to 18 age. 14 to 18 years. 14 to Adolescent age. 18 years. सर एक डाउट है बड़ी क्या है? सर, ये आर्टिकल 21 में नीचे लिखा हुआ है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ. कानून के हिसाब से 21 राइट टू एजुकेशन 21 कानून है ना. हाँ सर. यू हैव ए राइट टू एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन कानून भी है ना इसके हिसाब से. नहीं 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 सर, 21 ए नहीं, 21. इस 21 सर, ये एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब है? तरीका. कानून में तरीका रहना. तरीके से तो उसी पूरा तरीके से ही कानून, उसकी. पूरा केस चला के फांसी देना किसी को. डायरेक्ट फांसी नहीं दे सकते. पूरा केस चलाना. दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय ठीक लॉ. पूरी दुनिया को दिखाना कि हम ठीक. प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करें बोल. हम्म. ठीक है सर. नेक्स्ट, जान भी लेना है किसी की तो दिखावा करके लेना है. हम्म. तो आर्टिकल 21 है प्रोवाइड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन. What is 6 the to age 14 group? age group. 6 6 to to 14. 14 years. Does not include. 14 to 18 age Adolescent group people. Next, Article 22. ये पढ़िए. Only children of 6 to 14 years can enjoy such rights. के बाद In Article 45,
In Article 45, the provision for early childhood care and education to children below the age of 6 years is made, whereas in Article 51A, Clause K, it shall be duty of a parent or guardian to provide opportunity for education to his child ward between the age of 6 to 14 years. now देखिए, it is very clear. What is the under Article 21? What is the age group? 6 to 14 years. 14. 6 to 14 years. Under Article 45, Article Article below 40 6 is for years. DPSP. Hmm. And what is the age group? Below 6 years. Below 6 years. 6 And years. Article 51 AK. Promotion of Fundamental international duty. peace and security. अरे हाँ भाई क्या पढ़ रहे स्क्रीन पे क्या है? सर आर्टिकल 51 बोले ना आप? 51 A के पूरा पूरा duty पूरा of क्वेश्चन parent. पूरा क्वेश्चन पढ़िए. What did I say? 51 A के 51 A K. अच्छा, fundamental duties 6 to 14 years. Duty of a parent or guardian to provide opportunities for education to his children ward between the age of 6 to 14 years. please write it down. Make a note of it. नोट कर लो. कर रहे हैं. Fundamental right. Article